Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good afternoon, student. Yesterday we have finished all questions of the practice set 4.3. Now we have to start the practice set 5.4. Okay, now yes, practice set in practice set 5.4 we have to find out the probability. Okay, and that's why we need the formula of the probability. So yesterday already explained to you what is the probability. Probability of the any event is the ratio of the sample point of the event to the sample point of the sample space. I have a sample point of sample space to sample point of the sample space. तो sample point event का अपॉन क्या होगा sample point of the sample space. This will give you the probability of that event. Okay, see the formula. Probability of event A, the number of sample point in event A upon number of sample point in the sample space. ओके तो दिस इज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है. ओके तो ये ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. नाउ ऑब्जर्व द फॉर्मूला फर्स्ट. व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ sample space. Okay, so now suppose there is a event A. The probability of event A is equals to number of sample point in A upon number of sample point of S. तो दिस इज द फॉर्मूला. ओके, ये क्या है? फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का. number of sample point of event upon number of sample point of the sample space. Okay, then suppose if event A is A, so here Na upon Ns, so this ratios gives the लिखा है तो सबसे कौन Okay, now see the first question. First question देखो student. What is the first question? Question first. If two coins are tossed, find the probability of the following events. If the two coins are tossed, find the probability of the following events. Okay. So now getting at least one head, getting no head. So here the name of event is not given. So here we will consider event A. Let event A is let event A is event of getting, ऐसा कंसिडर करेंगे. ओके, इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, ऐसा लिखेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन वन. क्वेश्चन वन इट्स सॉल्यूशन. क्वेश्चन वन का क्या है? ये सॉल्यूशन. नाउ द सैंपल स्पेस फर्स्ट we will write. Find if the two coins are tossed, find the probability of the following event. Okay, the sample space
sample space when two coins are tossed. Okay, so s is equals to head head, head tail head, and tail. So therefore ns means sample point of the sample space is 4. Okay, so first we have to write down the sample space, then the sample point of the sample space. Now event a. Okay, event a, let, because here event's name is not given, so we will start with the let word. Let event a is event of getting, event of getting okay, so let event a is event of getting at least one head, at least one head. So therefore a is equals to a is equals to, let a event a is event of getting at least one head, so there will be one head and the score that have the two head that will be taken here. So now see hh, so here one head and more than one head is there, here also there is one head, in this score also there is one head. Okay, so now therefore na is equals to 3, na is equals to 3. Okay, and ns is equals to 4. Now probability of a, event's name is a, no, so that's why here p for probability, a for event a, so this will be na. Na means number of the sample point in event a upon number of sample point in the sample space. So now this is equals to na is equals to 3 and ns is equals to 4, so it is 3 upon 4. क्या आ गया आंसर में, 3/4. Okay, now its second event is, its second event is getting no head. सेकेंड इवेंट में क्या पूछा है, ये गेटिंग नो हेड, ऐसा इवेंट जिसमें हेड नहीं हो. तो अब देखो लेट, क्या लिखेंगे, लेट इवेंट बी, तो हियर वी विल गिव द नेम, लेट इवेंट बी is event of getting no head. Let event b is event of getting no head, so therefore b is equals to, now in this sample space, yes this is the score in which there is no head, इसी में सिर्फ head नहीं है, and except these all have the head, so this will come t t, so therefore nb is equals to 1, तो nb की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई. ओके, नाउ वी हैव टू टेक द रेशो, अब रेशो ले लेंगे. ओके, तो रेशो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेशो ही क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी. नाउ यस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो पी फॉर प्रोबेबिलिटी, बी इज event, so this will equals to number of events in b upon number of events in sample space, so this is equals to 1/4. Okay, so here 1/4. Okay, understood. तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है हम लोगों को, एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. yes, for event a it is the 3/4 and for event yes b it is the 1/4. so now write down the answer. Now for first one the ratio is 3/4 and for the second one it is 1/4.
Okay, now see the question number, yes question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है हम लोगों को कि क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है. See the question 2. If two dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. If the two dice are rolled simultaneously, अब दो डाई को क्या कर रहे, रोल कर रहे simultaneously. Find the probability of the following events. So now see the event. So here three events are asked. The sum of digits on upper faces is at least 10. तो सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस के जो डिजिट्स है उसका सम एटलीस्ट 10. एटलीस्ट 10 मीन्स 10 एंड मोर देन 10. द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज 33. सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज 33. द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई is greater than digits on the second die. Okay, for that we have to find out the probability of the events. इसके लिए probability of event हम लोगों को find out करना है. तो here first we will write down the sample space when the two dice are thrown. पहले क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, sample space लिखना पड़ेगा. नाउ ये सेकंड का क्या है, ये सॉल्यूशन. the sample space the sample space when two dice are रोल्ड और थ्रोन, जो भी मेंशन किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, लिखना है. व्हेन टू डाइज आर रोल्ड, फुल स्टॉप. ओके, नाउ तो यस स्कोर विल बी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. in second row 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 and 3,6. In next 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 and 4,6. Here 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6. Here 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Okay. So therefore NS is equals to 36 because here there are 36 scores. कितने scores हो रहे हैं यहाँ पे, 36. It's clear now. Now we will write down the events. अब क्या करेंगे, events के बारे में लिखेंगे. Now the first one, the sum on the upper faces at least 10. Okay, so now yes, event A we will solve. Let A is, because event's name is not given, so that's why we will start with the let word and we will give the name to the event. So let A is event of getting, let A is event of getting sum of scores on upper faces is at least 10. क्या लिखा हम लोगों ने, let A is event of getting sum of the score on upper faces is at least 10. So now therefore A is equals to now see here the maximum sum is 7. maximum sum कितना हो रहा है, 7. 1 plus 6 7, 7. Now here we want the 10 and more than 10. Now is 2,5, so this will be 7. 2,6, this will be 8. Now here highest sum will be 3,6 is 9. Now see here 4,
6, so this will come 4 comma 6. Okay, and sum of 4 comma 6 is 10. Now see here in the next column, yes, 5 comma 5, the sum is 10. 5 comma 6, the sum is more than 10, because at least 10 means 10 and more than 10. 10 भी आएगा और more than 10 भी आएगा, तो this will be come. Now yes, 6 comma 4, it will come. 6 comma 5, this will also come, and 6 comma 6 will come. Okay, so now therefore n is equals to 1 2 3 4 5 6. Okay, now we have to find out the what probability. Okay, so probability of event A, P for probability, A for event A. Okay, so this will be na, number of the sample point in event A, upon ns, number of the sample point in the sample space. Now this is equals to, this na is equals to 6 and ns is equals to 36. Now 6 1 ja 6, 6 6 ja 36, so this is equals to 1 upon 6. ओके, तो ये क्या मिल गया हम लोगों को, 1/6. नाउ इवेंट बी, अब क्या देखना है, इवेंट बी देखना है ना हम लोगों को. सेकंड इवेंट, व्हाट इज आस्क्ड इन द सेकंड इवेंट. लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. इन सेकंड इवेंट इट इज आस्क्ड द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज 33. क्या पूछा है, सी द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज 33. सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज 33 पूछा है. नाउ let let b is, let b is event of, getting, sum of, sum of scores on, sum of scores on upper faces is 33. Let b is event of getting sum of scores on upper faces is 33. Okay, so there is no such scores whose sum is 33. Okay, तो there is no such scores whose sum is 33. ऐसा कोई scores नहीं है. देखो ये highest score is 12. Okay, sum 6 plus 6 will be 12. तो यहाँ पे क्या बोला है, 33. But we have to write down the events. Okay, so here b is equals to, okay, empty. So that's why nb is equals to 0. Now here there this is empty, so there will be no element, so nb will equals to 0. nb कितना होगा, 0 होगा. Okay, understood. So we have to write down the events. Okay, ऐसा नहीं अगर हम लोगों को क्या है भी events नहीं मिला तो उसको छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है. हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा. तो there is highest score is 12. Okay, there is no such score whose sum is 33. Okay, because what, highest sum, is 12. बड़ा से बड़ा सम है 12 है, तो क्या हो जाएगा. नाउ पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन एस. तो दिस इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 36. 0 upon 36, so this is equals to 0. Okay, understood student कि how to find out the probability, कैसे probability find out करनी हम लोगों को. Okay, now yes, see the next event. What is asked in the next event that we have to see now. Okay, in third events, okay, now see the event number 3. The digit on the first die is greater than digit on the second die. डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई ग्रेटर देन डिजिट ऑन द सेकेंड डाई. जो फर्स्ट डाई के ऊपर डिजिट है वो ग्रेटर है
सेकेंड डाई से, ये देखना हम लोगों को। तो हियर वी विल राइट थर्ड वन, let C is event that the digit on first die is greater than digit on the first die is greater than digit on the second die। ओके, तो ऐसे स्कोर्स हम लोगों को लिखना है। तो C इज इक्वल्स टू, ओके, नाउ सी द सैंपल स्पेस। डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई। ओके, तो फर्स्ट डाई का ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड डाई के कंपेयर में। ओके, नाउ सी here the digit on both are same। here digit on the first is greater, first is smaller। so here we have to find out the digits on the first die is greater and second die is smaller। so now see, yes, in this the digit on the first die is smaller as compared to the digit on the second dice। now in see second row में क्या दिख रहा है? now digit on the first die is greater than the second die। तो this 2 comma 1 will come। पहला क्या आएगा? 2 comma 1। ओके, 2 comma 1 ये पहला स्कोर मिला, जिसमें क्या है, ये डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर है सेकेंड डाई के कंपेयर में। हियर इट इज इक्वल। नाउ हियर फर्स्ट डाई का स्कोर क्या है? स्मॉलर है सेकेंड से। नाउ सी द नेक्स्ट रो। तो हियर 3 comma 1, तो द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड। तो फ्रॉम द थर्ड रो 3 comma 1 एंड 3 comma 2 विल कम। क्या क्या आएगा यहाँ पे? थर्ड रो से 3 comma 1 and 3 comma 2। 3 comma 3 will not come because yes 3 comma 3 will become equal। now from the fourth row में 4 comma 1 will come, 4 comma 2 will come and 4 comma 3 will come and 4 comma 4 will become equal। now in next row 5 comma 1, 5 comma 2, 5 comma 3 and 5 comma 4 will come and from the next row 6 comma 1, 6 comma 2, 6 comma 3, 6 comma 4 and 6 comma 5 will come। okay, now count the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो NC is equals to 15। NC कितना आ गया? 15। नाउ वी विल फाइंड आउट द रेशो। अब क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। तो नाउ ये से NC अपॉन NS क्या हो जाएगा? NC अपॉन NS। now probability of the event C is equals to NC upon NS। so this is equals to NC is equals to 15 and NS is equals to 36। now both numbers can be cancelled with 3। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो दिस इज 5 अपॉन 12। ये क्या हो गया? 5 अपॉन 12 हो गया। ओके, अब इसके आगे ये कैंसल नहीं होगा। ओके, इट्स क्लियर नाउ। नाउ राइट डाउन द आंसर। नाउ यस फर्स्ट इन फर्स्ट वन व्हाट वी हैव गॉट? 1 upon 6, 1 upon 6। second we got the 0 and in third we got the 5 upon 12। okay, it's clear now। ये समझ में आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ओके, ऑब्जर्व द क्वेश्चन नंबर 3। there are 15 tickets in a box each bearing one of the numbers from ticket is drawn at random from the box। find the probability of the event that the tickets drawn। अब क्या बोला क्वेश्चन में? देयर आर द 15 टिकट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में टोटल 15 टिकट्स है। ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15 एंड जितने भी कार्ड्स है दैट बेयर 1 to 15 नंबर्स। ओके, एक कार्ड पे ओनली 1 नंबर्स होगा। तो किसी पे 1 होगा, किसी पे 2 होगा। तो इन दिस वे दैट कार्ड बियर्स
1 to 15 numbers and there is only one number in one card. One ticket is drawn at random from the box. अब उस में से उस बॉक्स में से एक टिकट हमको रैंडमली क्या करना है, ड्रॉ करना है, निकालना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिकट्स ड्रॉन. तो टिकट्स जो ड्रॉ किए हैं उसके हम लोगों को क्या लिखने हैं, प्रोबेबिलिटी. नाउ इन फर्स्ट वन शोज एन इवन नंबर. अब पहला जो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है ये इवन नंबर्स की निकालनी है. ओके, तो नाउ फर्स्ट वी विल राइट डाउन द सैंपल स्पेस फॉर द tickets that bear number 1 to 15. Okay, so now yes, first write down the sample space. Third one, okay, the sample space, the sample space when one ticket is drawn from box. तो S is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, therefore NS is equals to 50. फुल स्टॉप. क्या क्या मिल गया हम लोगों को, सैंपल स्पेस, ओके, एंड सैंपल पॉइंट. नाउ वी हैव टू राइट डाउन द इवेंट्स. अब क्या लिखना है, इवेंट्स के बारे में लिखना है. नाउ सी द फर्स्ट इवेंट. ओके, इवेंट ए. व्हाट इज द इवेंट ए? shows an even number. Now here the name of event is not given, so now we have to yes name the events. क्या करना है, इवेंट को नेमिंग देना है. तो लेट फर्स्ट वन, लेट इवेंट ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग, event of getting even numbers, event of getting even numbers. So therefore A is equals to, now see here what are the even numbers. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 are the even number. So here 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये नंबर्स आएंगे. नाउ काउंट द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो एन इज इक्वल्स टू 7. एन इज इक्वल्स टू 7. टोटल 7 है. नाउ यस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी? P of A, probability of A is equals to NA upon NS. So this is equals to, now NA is equals to 7 and NS is equals to 15. तो 7 upon 15, this cannot be cancelled out, ये cancel नहीं होगा, तो this will remain as it is. Okay, now we have to write down the event B. event B लिखना है अभी हम लोगों को. क्या लिखना है, इवेंट बी. सेकेंड, नाउ सेकेंड इवेंट shows a number which is multiple of 5. shows a number which is multiple of 5. तो let B is event of getting multiple of 5. getting multiple of 5. B is event of getting multiple of 5. 5 के मल्टीपल्स मिलना. तो नाउ यस बी इज इक्वल्स टू, नाउ सी इन द इवेंट्स. अब देखो इसमें इवेंट्स में देखो मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स जो 5 से डिवाइड होते हैं सच नंबर्स. तो 5, 10 एंड 15. तो दिस 3 आर द मल्टीपल ऑफ 5. तो 5, 10 एंड 15 ओनली कम हियर. तो देयरफॉर एन बी इज इक्वल्स टू 3. एन बी कितना मिल गया हम लोगों को, 3 मिल गया. अब क्या करना है हम लोगों को, yes, probability of B is equals to NB
upon ns. So this is equals to 3 upon 15. So 3 1 ja 3, 3 5 ja 15. So it is 1 upon 5. Okay, so here there are only two events. इसमें सिर्फ कितने इवेंट है? दो ही इवेंट है. Okay, now write down the answer. Okay, now first ratio is 7 upon 15 and second one is the 1 upon 5. Okay, it's clear now. ये clear हो गया student कि how to find out the probability. Now yes, question number 4. Question number 4. Now yes, we have completed question 1, 2 and 3. See the question number 4 now. A two digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. Without repetition, what is very important? Because when it is not mentioned, then two-digit number will formed using the digit will be 22, 33, 55, 77 and 99. Okay, but here what is mentioned without repetition. Okay, तो what is the probability that number formed is? तो क्या probability होगा? तो first you have to find, yes, write down the sample space of this two digit numbers formed using the digits. So first we will keep the 2 at the tens place and other digit at unit place. Similarly, we will place the 3 at the tens place and we will keep all digit at unit place, and 5 at tens place and others at the unit place. 7 at the tens place and other at unit place. 9 at the tens place and others at the unit place. So in this way we will get the two digit numbers. ऐसे हम लोगों को two digit numbers मिल जाएगा. Okay student, so now first write down the sample space. Okay, so now yes, it is fourth one. The sample space, the sample space of two digit numbers formed is, the s is equals to, now yes, first we will place the 2 at the tens place. So 2 and other at the unit place. So 2 3 23, 2 5 25, 2 7 20.